I hope you are doing well. Myself, Majla. Today we will start the International Organization chapter, or you can say United Nations and its organization. This is part 1. Let's start. Now see, in this first part, we will discuss about why do we need international organization. Then we will look at into evolution of United Nation and then its objectives and its various principal organs we will discuss in detail. Okay, now let's start with the why do we need international organization. First thing is that international organization, it helps to deal with the matters like war and peace in a very cooperative manner. Okay, so जो member countries होंगे international organization का वो better तरीके से आपस में cooperate कर सकते हैं to deal with the matters like war and peace, and they can cooperate among each other, so that they should focus on creating a better living condition for all the people by cooperating among with each other. Okay, by preventing terrorism, by preventing global warming, they can cooperate among each other in order to create a better living condition for all the people around the world. Fine. And see, international organization is not a super state with authority over its members. Okay, so international organization, since member के through create हुआ है, तो it cannot be superior over the state. Okay, that is the reason that various decisions of the United Nations are not binding on the member states. Fine, जो भी वो decisions लेते हैं वो binding नहीं है member states के ऊपर. Only the matters that are the resolutions, or you can say different decisions that has been taken at the Security Council, वो मेंबर कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग होता है. जनरल असेंबली इफ यू टेक, वहाँ पर कोई रेजोल्यूशन पास होता है, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द मेंबर स्टेट्स. फाइन. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ के भी जो जजमेंट्स होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते. ओके, दे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जनरल असेंबली वो अपना डेफिनेटली what is right, what is true, they present that thing. Fine. जनरल असेंबली अपना रेजोल्यूशन अगर पास करता है तो what is right that they present it, that they recommend the members that they have to do like this. Fine, but it's not binding on them. Whereas if you talk about Security Council, उसके decisions binding होते हैं, because Security Council deals with the matters, primarily deals with matters like war and peace. अगर उसमें वहाँ पर कुछ भी resolutions पास होते हैं that are binding on the all members of the United Nations. Okay, so keep this in mind. It is created by the state, and of course जो state के through created, तो definitely it tries its level best to solve the whatever the problems, जो भी conflicts arise होते हैं between the member states or the border dispute or whatever the other kind of disputes. This international organization tries its level best that that all those disputes you should not handle them with the war. That should be solved in a very peaceful way. That is what the international organization focuses on. Fine. And there are certain issues where you need the cooperation of all the countries around the world. Okay, for example, disease like COVID-19. Fine. तो जो disease होते हैं वहाँ, या you can say global warming, ओके, एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, तो ऐसे कुछ इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर सारे मेंबर कंट्रीज़ को, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी को कॉपरेट करना होगा. देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. कोविड-19 का प्रॉब्लम है, ओनली वन कंट्री कॉपरेट और टू कंट्रीज कॉपरेट विद ईच अदर, दैट दे शुड ट्राई द लेवल बेस्ट कि कोविड-19 कम हो जाए, वो यहाँ से ख़त्म हो जाए. इट विल नॉट बी पॉसिबल. ओके, ऑल द मेंबर कंट्रीज should cooperate with each other, then only they can solve this kind of problem. Fine. So disease को इस तरीके से, जो जहाँ पर ऐसे issues जहाँ पर बहुत सारे member countries को cooperate करने की ज़रूरत है in order to deal with such kind of cases, there you require an international organization. Okay, so this is the reason why we need international organization. Okay, one more thing is that it also helps to produce informations and ideas about how to cooperate. Okay, since member countries होंगे तो definitely it provides a good mechanism, rules and regulation how they can cooperate among each other in order to deal with various kind of issues. Okay, so I hope why do we need international organization is clear to all of you. So if you get any question about why do we need international organization, you can write all these points very well in your exam. Okay, now let's see the evolution of United Nations. Now see, as you all know that World War I time period is this one, that is from 1914 to 18. After the World War I, League of Nations was formed in order to stop future war. Okay, then but unfortunately this League of Nations failed in its objectives, and the Second World War took place in 1939 to 45. Okay, and after the Second World War, United Nations was created
So it was created on 24th October 1945, on that day we celebrate as the United Nation Day. Okay, so this United Nation created by just signing a charter by 51 member states at that time, and then at present we have 193 member states. Okay, so recently South Sudan joined this United Nation, I think around 2011. Okay, and see, United Nation is an intergovernmental organization. Okay, and then United Nation के जो head जो है, that is Secretary General, is the head of the secretariat, one of the principal organs of the United Nation. Antonio Guterres, so he was the Prime Minister of Portugal. Okay, from 1995 to 2002, and he was the head of United Nations High Commissioner for Refugees from 2005 to 2015. Okay, now let's look at the various objectives of United Nations. Now the first main objective, very easy, simple, that is to maintain the international peace and security. Okay, second one, international conflicts को prevent करना, and third, to develop a friendly relation among the member nations, among the nations. Okay, and fourth one, achieve international cooperation on various issues, and fifth, that they have to it focus on ensuring the social and economic development of all over the world. Okay, because lack of social or economic development जब होता है उससे भी conflicts होते हैं between two countries. Okay, so it also focuses on improving the economic and social condition of different countries around the world. Okay, now let's look at the various principal organs of the United Nations. Let's look at the United Nations principal organs first. Okay, I have taken this picture from your NCERT book, page number 85. This is very important for your board exam. You can see various principal organs: Security Council, International Court of Justice, General Assembly, Secretariat, and then we have Social Economic Council, Trusteeship Council. So these are principal organs of United Nations. Total 6 hai. Okay, so first I will explain about all these principal organs, and then I will discuss in brief about all these informations given in these white boxes. Okay, now let's start with the Security Council. Now the first one, Security Council में if you look at the members, we have total 15 members. Okay, 15 members में जो 5 members हैं वो permanent members हैं. They have veto power. What is the veto power? Its benefits and drawbacks I will discuss in part 2. Fine. Now see, वो 5 members कौन से? USA, UK, France, China, and then Russia. Okay, at that time it was USSR. Fine. So 5 members जो है they are permanent members. See, since these 5 members, they played a key role in in establishing the United Nations, and they emerged as the victorious countries after the World War II. Hence they were given a privilege of veto power and permanent seat in the Security Council. Okay, and 10 members we have non-permanent members. They are elected by the General Assembly for the term of 2 years. Okay, acha, keep one thing in mind, that a country cannot be re-elected immediately after completing a term of 2 years. For example, India जो था Security Council में 7 times रह चुके हैं as a non-permanent member. So you can say total 14 years पर है, right? So recently 2011 और 12 में इंडिया मेंबर था as a non-permanent member in the Security Council. So इंडिया जैसे ही 2012 के बाद again वो immediately re-elect नहीं हो सकता. फाइन, जैसे ये 2 years कंप्लीट हो तो अगेन वो इमीडिएटली री इलेक्ट नहीं हो सकता. दैट इज अ प्रोविजन. एंड द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर elected in a manner so that they represent all continents of the world. Okay, so पूरे कॉन्टिनेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करें, उस तरीके से उनको इलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 मेंबर्स जो है वो अफ्रीका और एशियन कंट्रीज से इलेक्ट होते हैं. Then 1 member definitely from Eastern European countries से होगा. 2 member definitely from Latin America, Caribbean countries से region होगा, and 2 members from Western Europe और other countries. Okay, वहाँ से होंगे. Fine, तो इस तरीके से इसको maintain करते हैं. And then see, decision of Security Council is binding on all the United Nation members. Okay, so जो भी वो peace, security, जो भी वो resolutions pass करते हैं, उनके जो भी decision होते हैं वो binding होते हैं. That they have to follow that. Okay, and it deals primarily with international peace and security से deal करता है United Nation Security Council. Okay, now let's look at the General Assembly. General Assembly में 193 members हैं. Basically United Nation के जितने भी total जो members हैं वो automatically General Assembly के वो member बन जाते हैं.
देखो जनरल असेंबली के डिसीजंस जो होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं ऑन यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स, फाइन। और दूसरा, मेजर डिसीजंस जो होते हैं जनरल असेंबली में दे आर टेकन बाय 2/3 मेजोरिटी, और बाकी जो जो भी डिसीजंस होते हैं वो अदर सिंपल मैटर्स के थ्रू होते हैं। देखो मेजर डिसीजंस कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन होते हैं, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू बजट्स वगैरह, उसके क्या होगा 2/3 मेजोरिटी से उसे पास करना होगा। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वी हैव टोटल 54 मेंबर्स, 54 सीट्स इसमें अलॉटेड होते हैं, एंड देन out of that 54 seats, those 54 members elected for those 54 seats, they are elected for the term of 3 years, fine, on the basis of geographical representation. Now see, geographical representation means what? It means basically यहाँ पर geographically region wise यहाँ पर seats जो है 54 उसको divide किया हुआ है. For example, out of 54 seats, 14 seats are reserved for Africa, okay, and 11 for Asia, 6 for Eastern Europe, and then 10 seats for Latin American Caribbean region, and 13 for Western Europe and others. Okay, so if you count all these things, then you will get 54 seats, fine. Now, and they are, of course, they are elected by the General Assembly. Okay, General Assembly elect करता है for the term of 3 years. Okay, and see, what is the main work of this Economic and Social Council? Definitely, it is a central body for coordinating the economic and social work of United Nation. So जो भी social और economic work से connected है, उन सारे matters को जो coordinate करते हैं, that is actually done by this Economic and Social Council. जैसे देखो इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई मैटर्स हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, स्टेटस ऑफ विमेन का हो गया, फाइन, लाइक इस तरीके से जो मैटर्स कनेक्टेड है उन सारे मैटर्स को सोशल और इकोनॉमिक काउंसिल जो डील करता है, ओके, कोऑर्डिनेट करता है विद द यूनाइटेड नेशन. नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज द ट्रस्टशिप काउंसिल. ट्रस्टशिप काउंसिल जो है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947, ओके, और इसको 1994 में सस्पेंड कर दिया, ओके, बिकॉज इसका जो मेन मोटिव जो था, जो भी इसका मिशन जो था, दैट वाज फुलफिल्ड. ओके, नाउ इसको एस्टैब्लिश क्यों किया था? दैट इज इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प ensure that trust territories are administered in the best interest of their inhabitants and of international peace and security. Okay, so basically कुछ ऐसे territories थे जिनको हम कहते हैं ट्रस्ट टेरिटरीज, ओके, जो पहले लीग ऑफ नेशन के उसके मैंडेट के अंदर में थे, फाइन. जैसे फॉर एग्जांपल दिस न्यू गिनी, नारू, इटालियन सोमिलैंड, ओके, वेस्टर्न समोहा. तो कुछ ऐसे टेरिटरीज थे विच वर एक्चुअली नॉट फिट इनफ टू एडमिनिस्टर ऑन देयर ओन. सो उन टेरिटरीज को यूनाइटेड नेशन जो था, ये ट्रस्टशिप काउंसिल उनको एडमिनिस्टर करता था, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन दे बिकम फिट इनफ टू एडमिनिस्टर देयर ओन टेरिटरीज, दे वर गिवन इंडिपेंडेंस. और फाइनली लास्ट जो ऐसा टेरिटरी जो था, दैट वॉज पलाहू. ओके, इट वॉज द लास्ट यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट टेरिटरी. यू कैन सी द मैप ऑफ पलाहू. ये ओशियाना रीजन में आता है. यहाँ पर देखना, ओवर हियर यू कैन सी. देखो कुछ तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गए थे और कुछ ऐसे भी थे जो दूसरे नियर बाय रीजन के साथ मर्ज भी हो गए थे. फॉर एग्जांपल दिस न्यू गिनी वाज मर्ज्ड विद पपुआ, ओके, एंड दैट वाज एक्चुअली एडमिनिस्टर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया. यूनाइटेड नेशन ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट था और ऑस्ट्रेलिया ने उसको एडमिनिस्टर किया था. ओके, सो यू कैन सी हियर द ट्रस्ट एग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड नेशन एंड द ऑस्ट्रेलिया. ऐसे ही और भी थे, जैसे यूनाइटेड नेशन इटली के बीच में ट्रस्ट एग्रीमेंट थे, इसीलिए हम इसको ट्रस्टशिप कहते हैं, फाइन. और ऐसे ट्रस्ट एग्रीमेंट एक और भी थे, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन बेल्जियम के साथ था. ओके, सो इस तरीके से 11 ऐसे टोटल टेरिटरीज थे, 11, कीप इन माइंड, जिनको इस ट्रस्टशिप काउंसिल ने एडमिनिस्टर किया था. एंड लास्ट वन जो है दैट वाज दिस वन, पलाऊ. ओके, आई विल शो यू दिस मैप इन पलाऊ इन डिटेल. You can see the location of Palau. Okay, this is, इसको हम कहते हैं ओशियाना रीजन. ओके, यहाँ पर देखना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, फाइन. तो यहाँ पर है पलाऊ, स्मॉल आइलैंड, यू कैन सी हियर, फाइन. आई होप द लोकेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. See, this trustship council was the 4th organ. Okay, 2 more we have. Let's look at. Now see, the 5th one is the International Court of Justice.
it is it is the main USA's judicial organ, fine, and it is located in The Hague in Netherlands, and all other remaining principal organs headquarter is located in New York, USA. Okay, and this is the only principal organ whose headquarters is located in The Hague, Netherlands. Let me show you the map. You can see the location of International Court of Justice in Netherlands, The Hague. Okay, यहाँ पर देखना, see carefully. Over here we have this International Court of Justice. You can see the building of that International Court of Justice. See carefully over here. I hope the location you can see it carefully. Fine. Now see, this is The Hague in Netherlands. This International Court of Justice established in 1945, and it is also known as a World Court, and it assumed its function from 1946. Okay, total इसमें 15 judges हैं. They are elected for the term of 9 years. Okay, and how they are elected? Okay, they are elected by absolute majority both in Security Council और जनरल असेंबली. जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी के थ्रू यहाँ पर 15 जजेस जो है ये इलेक्ट होते हैं. फाइन. Now, this code settles the legal disputes only between the nations, not between the individuals. Keep that in mind. Okay, so जो भी legal disputes होते हैं between two nations as per the international law, this International Court of Justice deals with them, not between the जो अगर कोई दो citizen के बीच में conflict है वो matters नहीं deal करता. Okay, so keep that in mind. Now the last one is the Secretariat. Okay, the Secretariat is basically it is an international staff सर्विंग दी अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स. बेसिकली सेक्रेटेरिएट एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है. ओके, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी यू कैन से ऑफ द वेरियस डिफरेंट ऑर्गन्स. यहाँ पर सारे जो एग्जीक्यूटिव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स होते हैं. ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एक तरीके से. और इसका हेड कौन है? दैट इज हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन, सेक्रेटरी जनरल. Okay, and the Secretary General is appointed by the General Assembly on the recommendation of Security Council. Okay, and the Secretary General is elected for the period of appointed by for the period of 5 years, and this 5 years renewable. Okay, renew हो सकता है. Antonio Guterres, you can see this person is from Portugal. Now let me show you the headquarter of this Secretariat as well. You can see the location of United Nations headquarter, that is the head Secretariat. You can see carefully in New York. Okay, यहाँ पर देखना ये जो building है ना, this is the Secretariat of United Nations, headquarter of United Nations. Now see this building carefully. Let me zoom in. You can see this is that Secretariat building, administrative branch of United Nations. It's a huge building. See. I hope this one's location is also clear to all of you. Fine. Now we have seen the various principal organs in detail. Now let's look at the information that are given in this white boxes. Now see, this is subsidiary bodies. Okay, subsidiary bodies में बहुत सारे bodies हैं. You can see here that is military committee, military staff committee, international criminal tribunal. Okay, and then peacekeeping operation missions जो होते हैं, ये सारे क्या करते हैं, इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और इनके जो भी रिपोर्ट्स होते हैं दैट दे सबमिट टू दी सिक्योरिटी काउंसिल. ओके, और वन मोर यू कैन सी हियर दिस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. देन यू कैन सी दी this they submit, see, International Atomic Energy Agency जो it submit its report both to the General Assembly and then to the Security Council. Now a third one you can see here, programs and funds. Okay, for example, this Conference on Trade and Development, this we have UNCTAD, this we have discussed in the first Cold War chapter. Okay, and the environment program, development program, then children's fund, then we have UNICEF. Okay, High Commissioner for Refugees जो अभी present में जो Secretary General है ये High Commissioner for Refugees रह चुके हैं. Okay, and then World Food Program, Relief and Work Agencies, Palestine refugees in the Near East. Okay, so human settlement programs, ये सारे जो भी reports अपने होते हैं इनके appointments related all are dealt by this one General Assembly जो है वो deal करता है. Okay, then इसके subsidiary कुछ bodies भी है, for example committees and ad hoc bodies, and then you can say
रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये भी अपना रिपोर्ट यहाँ पर जनरल असेंबली को सबमिट करते हैं. एंड यहाँ पर देखना रीजनल कुछ कमीशंस है एंड दे सबमिट द रिपोर्ट टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो भी अपने रिपोर्ट्स होते हैं वो जनरल असेंबली को सबमिट करते हैं. ओके और जनरल असेंबली से कनेक्टेड और भी बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल सेक्रेटेरिएट भी कनेक्टेड है इसके साथ. एंड देन अदर एंटिटीज़ लाइक हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, जॉइंट प्रोग्राम ऑन HIV AIDS. ओके सो वी कैन सी दिस जनरल असेंबली इज द मेन डेलिब्रेटिव बॉडी. ओके एक मेन जो बॉडी है वो जनरल असेंबली, एंड ऑफ कोर्स सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ मोर पावर. फाइन. So this is all about this one. You should know about the full form of all these terms. Okay, यहाँ पर जो full forms है ना, this can be asked in 1 marks. For example, UNEP, UNCTAD, UNICEF, okay, UNHCR. ये full forms आपको पता होना चाहिए बेटा. So kindly revise all those things. Although it's information यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, but still keep revising on every day. For example, if you learn 1 or 2 full form every day on every day basis, then it will be easy for you all. Okay. So I hope this part is clear to all of you. Fine. In next part, we will discuss about the all the reforms related to United Nations Security Council and about veto power. And we will discuss in detail. Thank you for watching this video. Ajay, say before winding up, just look at the logo of this United Nation. Notice here. ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. This is the United Nation logo, and you can see here the world map. Okay, it's the emblem of world map, and these leaves, ये जो leaves है ना, leaves किसके हैं? These are the leaves of olive. Okay, olive branch है. Fine. Olive क्या है? They signify world peace. Okay, olive branches जो इसके around जो यहाँ पर create किया हुआ है, that is it signifies world peace. Okay, so this I have missed to discuss with you all. Now I've done it. Thank you.